हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हम लोकल लिंक फाइंड करते हैं यूजिंग स्किमिंग फ्रॉग। नाउ इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड इश्यूज इन मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस एंड हेडिंग टैग्स लाइक H1 and H2, right? So we will utilize the skimming frogs and find different issues like missing title and duplicate titles and titles having length is greater than 60 or 70 characters. So hello guys, now let's explore with the help of a scenario why these meta tags are important for your website. Whenever a user performs a search query in Google, then Google will display the relevant sub results with titles and descriptions. If the user finds these results relevant and compelling, he will click the website and will further land to your landing page. But if the user didn't find these relevant and compelling, then he will further scroll down to the next results. So with the help of this scenario, we understand why these meta tags are important for your websites. So meta title is a direct ranking factor and it helps the search engine to understand your page topic. Similarly, meta descriptions also helps to improve the CTR, that is the click-through rate, and more clicks is directly proportional to a positive SEO signals and it will further improve your search rankings. अब हम स्क्रीमिंग फ्रॉग पे जाते हैं एंड देखते हैं कि कैसे इन इश्यूज को वी कैन फाइंड. So whenever you crawl a website, on your right hand side you will find different tabs and यहाँ पे हमें मेटा टाइटल पे जाना है, पेज टाइटल पे. एंड इन दिस वी आर, तो यहाँ पे हमें पेज टाइटल पे जाना है. पेज टाइटल में जैसे कि हम देख रहे हैं देयर आर 226 पेजेस एंड देयर आर 46 पेजेस विद मिसिंग पेज टाइटल्स, 50 pages with duplicate page titles and 3 pages with over 60 character page titles. Let's take these one by one. Whenever you click on the missing page title, just go to the left hand side and you will see a list of all the URLs having missing page titles. लेकिन यहाँ पे हमें relevant URL ढूंढने पड़ते हैं, सर्च करने पड़ेंगे. For example, this is not the relevant URL because it is a query parameter, but this is a relevant URL. This is also a relevant URL. Showroom is also a relevant URL and contact is also a relevant URL. So generally हमें करना क्या है, हमें इस पर क्लिक करना है. लेफ्ट हैंड साइड पे सारे रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे विद मिसिंग पेज टाइटल्स. वहाँ पे वी हैव टू सर्च डाउन द रेलिवेंट पेजेस जो हमें फिक्स करने हैं. Similarly, we have to click on the duplicate page title and the left side will populate with all the pages having duplicate page titles. हमें एक एक पेजेस पे देखने हैं कि कौन कौन से रेलिवेंट है. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेरी पैरामीटर वाले हैं तो ये रेलिवेंट पेज नहीं है, सो वी शुड अवॉइड दिस पेजेस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रेलिवेंट पेज, राइट, दिस इज अ रेलिवेंट पेज. सो हमें रेलिवेंट पेजेस के लिए ही डुप्लीकेट पेज टाइटल फिक्स करने हैं. नाउ we goes to the page meta description. So there are 8 pages with missing meta description, 90 pages with duplicate meta description. So let's take this one by one. Whenever we click on the missing meta descriptions, on the left hand side the result will populate. अब हमें ये ढूंढना है कि इसमें कौन कौन से relevant pages हैं जिसमें meta description missing है. For example, this is a relevant page, this is a relevant page, this is a relevant page, but the above one is not a relevant page because it includes the query parameters. Similarly, we can find the duplicate meta descriptions also. अब हम देखते हैं H1 के बारे में. So there are around 164 pages with missing H1. For example, the homepage doesn't have a H1. So we should fix this issue as soon as possible. There are around 746 pages with missing H1. There are around 46 pages with duplicate H1. We need to figure out the pages, the relevant pages, and fix this issue as soon as possible because H1 should be unique for each of the web pages.
So hello guys, in this video we have talked about how we can find different issues related to meta title, meta descriptions and heading tags using Screaming Frog. We will further create more videos related to Screaming Frog and तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।